अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिसनिंग टेस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं और लिसनिंग टेस्ट जितने भी आएंगे इसमें आपने सबसे पहले ये समझना है कि सवालों को हल कैसे करना है। जो क्वेश्चन है उनको आपने समझना है। जितने भी क्वेश्चन टाइप्स आएंगे लिसनिंग में वो मैं आपको समझा दूंगा पहले। उसके बाद हर सेक्शन की वन बाय वन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। यानी कि सेक्शन वन मैंने आपको समझाना है कि इसमें आपने इसको कैसे हल करना है। उसके बाद एक प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने आ जाएगा सेक्शन वन का, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। तो उसको आपने उसकी लिसनिंग करके उसको हल करना है। इसी तरह फिर सेक्शन 2, 3 और 4 और एंड पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और डेली बेस पे आपने चेक कर लेना है कि आपकी जो लिसनिंग है उसमें किस हद तक इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये हर लिसनिंग टेस्ट में होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कोई सवाल हो तो कमेंट्स कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लिसनिंग टेस्ट। आज हमारे पास बुक नंबर 5 है। लिसनिंग टेस्ट इसका है 1 और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आएगा वो है जी सेक्शन 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है। कंप्लीट द नोट्स बिलो। ये नोट्स हैं जी, इनमें खाली जगह दी हुई है और बाकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो इन्फॉर्मेशन मिस है उसको हमने कंप्लीट करना है। वो इन्फॉर्मेशन हमने सुन के लिसनिंग करके वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट करनी है, यहाँ इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है। सबसे पहली बात देखने वाली ये है, ऊपर लिखा हुआ है राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड अ नंबर। आपने इसमें आंसर आपका जो मैक्सिमम होगा वो 2 वर्ड्स का होगा। 2 वर्ड्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा आंसर नहीं। अगर आप 3 वर्ड्स पे जाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। 1 वर्ड में आंसर हो सकता है या मैक्सिमम 2 में। 2 से ज़्यादा वर्ड आपने इस्तेमाल नहीं करेंगे। और नंबर होगा, और नंबर में भी आम तौर पर नंबर आप वर्ड्स में लिखते हैं तो वो बेहतर होता है। अगर मतलब आप वैसे भी लिखें तो नंबर एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं आइल्ट्स में वो कहते हैं कि नंबर भी आप वर्ड्स में लिखें ताकि ये एक वर्ड आपका गिना जाए। नोट्स देखते हैं जी। लिखा हुआ है ड्रीम टाइम ट्रैवल एजेंसी टूर इन्फॉर्मेशन। ये टूर की इन्फॉर्मेशन है और एजेंसी का नाम है ड्रीम टाइम ट्रैवल एजेंसी। एग्जाम्पल आपको दी हुई है और नीचे लिखा हुआ हॉलीडे नेम और आगे उन्होंने वो जो खाली जगह है उसको फिल किया हुआ है वेल वॉच एक्सपीरियंस, ये जगह का नाम है। इसी तरह उन्होंने एग्जाम्पल आपको दी कि जिस तरह हमने ये जगह फिल की है आपने भी इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। अब जो नए टेस्ट होते हैं जो बुक नंबर 16 भी अब तो आ गई है, और इसमें अब आपको एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगी। और जितने भी आपके टेस्ट होते हैं इनमें आपको एग्जाम्पल नहीं दी जाती। एग्जामिनर को ये पता होता है कि जो बंदा अभी टेस्ट देने आ रहा है वो ऑलरेडी ट्रेंड है। ये ट्रेनिंग ले के आते हैं ऑनलाइन या किसी भी अदारे से ट्रेनिंग ले के आते हैं, तो एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा वो टेस्ट शुरू कर देते हैं ताकि वक्त बच सके और आपके लिए थोड़ा सा टेस्ट भी डिफ़िकल्ट हो। तो आगे शुरू करते हैं जी। लिखा हुआ जी हॉलीडे लेंथ 2 डेज़ उन्होंने प्रोवाइड की हुई है इन्फॉर्मेशन। आगे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि टाइप किस टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन है, रेलगाड़ी है, मतलब ट्रेन, इसके अलावा एरोप्लेन है, बस है, मिनी बस है, कार है, किस किस किस्म की ट्रांसपोर्ट है, वो जो अब लिसनिंग में आपने सुनना है, जो जिस किस्म की भी ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ आपने इंफॉर्मेशन पुट करनी है। उसके बाद है मैक्सिमम ग्रुप साइज़। यहाँ ग्रुप साइज़ का मतलब है जी तादाद कितनी है, कितने बंदे हैं, 10 है, 12 है, 20 है, जितने भी है वो आप सुनेंगे तो यहाँ वो लिखना है आपने कि ग्रुप का साइज़ कितना है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जी नेक्स्ट टू अ डेट। अब वो डेट पूछ रहा है तो यहाँ आपको कोई चीज़ गेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको डेट बताएगा कि नेक्स्ट टू अ डेट कौन सी है। वो आपने यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि ये वाली नेक्स्ट टू अ डेट है। इसके बाद आगे जी होटल नेम। आपने होटल नेम बड़े गौर से सुनना है और याद रखना है आर्टिकल अगर साथ आ जाए दी, ए या एन, इस तरह का कोई, तो उसमें सिंगुलर नाम आपने लिखना है। और इसके अलावा अगर आर्टिकल नहीं आता तो प्लूरल होता है, लेकिन होटल नेम ऐसा है जो प्लूरल भी आ सकता है। ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि नाम जो होते हैं वो अदारों के या किसी भी जगह का वो कोई कुछ भी रखा जा सकता है, उसमें रूल्स फॉलो नहीं किए जाते। आगे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है चूज़ 2 लेटर्स ए टू ई। ए से ई तक आपको उन्होंने लेटर्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई तक। यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास।
इन 5 ऑप्शंस में से वो आपसे सवाल कर रहा है विच टू थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द टूर। टूर की जो प्राइस है उनमें से 2 चीज़ें इंक्लूड हैं। अब 2 चीज़ें जो हैं उनको आपने टिक करना है ए से ई तक, इनमें से सिर्फ 2। अब हो सकता है ये पांचों की पांचों चीज़ें जो आपको बताए कि इसमें ये इंक्लूड हमने करना था, ये नहीं किया, ये इंक्लूड है, ये हम इंक्लूड अगली दफ़ा करेंगे। अब आपने ये सवाल आपसे ये है कि इंक्लूड है क्या। ये नहीं आपने देखना कि नेक्स्ट मंथ में हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये हमने पहले इंक्लूड किया था अब छोड़ दिया। आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, उस पर आपने टिक नहीं करनी। आपने टिक करना है जो सवाल है। सवाल ये है कि इंक्लूड है क्या, जो है उन 2 पे आपने टिक करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 to 10 है जी। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको आपने कंप्लीट करना है। राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर। यहाँ 3 वर्ड्स हैं जी, वो कह रहे हैं कि 3 वर्ड से ज़्यादा आंसर नहीं होना चाहिए। आर्ट्स में वैसे भी 3 वर्ड से ज़्यादा आंसर नहीं होता, तो ये मैक्सिमम आपका लिमिट 3 वर्ड की होती है। तो यहाँ वो कह रहा है जी 3 वर्ड्स करके जो सेंटेंसेस कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। द टूर कॉस्ट डॉलर डैश। अब यहाँ डॉलर उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि प्राइस क्या है या इसकी कीमत क्या होगी, तो उन्होंने ऑलरेडी आपको डॉलर लिखा हुआ है। अब इसके साथ आपने डॉलर नहीं लिखना, क्योंकि डॉलर ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है। अगर आप इसके साथ फिर डॉलर लिखते हैं और आगे जो भी रकम है वो आप लिखते हैं, डॉलर जितने भी हैं वो लिखते हैं, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। डॉलर को ऑप्शन छोड़ देना है, आगे जो नंबर वो बताएंगे वो आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, बुकिंग्स मस्ट बी मेड नो लेटर दैन डैश डेज इन एडवांस। अब यहाँ डेज ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है, डेज के नंबर्स आएंगे कि कितने दिन पहले आपने बुकिंग करनी है। वो जितने दिन भी आपको रिकॉर्डिंग में बताएंगे वो आपने लिख देना है जी कि इतने दिन बाद पहले जो बुकिंग करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है जी। अ डैश डिपॉजिट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ ए डैश एक हैंडसम हो सकता है, हैंडसम डिपॉजिट इज़ रिक्वायर्ड। अब मिनिमम हो सकता है, वो आगे वो बता दे कितना है, या इसके अलावा परसेंटेज दी जा सकती है कि इतने परसेंट, 5, 10, 20, 30% आपने डिपॉजिट हमें करवाना है, 50% डिपॉजिट करवाना है, तो फिर अगली बात होगी। मतलब यहाँ इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है जी। द कस्टमर्स रेफरेंस नंबर इज़ डैश। यहाँ आपको वो रेफरेंस नंबर बोलेंगे और नंबर में अल्फ़ाबेट भी होते हैं, यानी कि ABCD भी आएगी और इसमें नंबर भी आएंगे, 1 2 3 4 ये गिनती भी आएगी, तो दोनों होते हैं। अगर एक बताएं आपको तो एक ही होगा, गिनती अगर बताएं, और अगर साथ में ABC भी इंक्लूड हो तो वो भी आपने लिखना है। आपने सिर्फ नंबर ही नहीं लिख देना, ये भी स्टूडेंट बाज़ औक़ात गलती कर जाते हैं। तो ये आपने रेफरेंस नंबर यहाँ लिखना है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो एग्ज़ामिनर है, जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग में बाज़ औक़ात आपको थोड़ा सा नंबर बता के वो आपको मिसगाइड करते हैं, बाद में बोलते हैं कि हाँ ये गलत हो गया हमसे, आप दोबारा लिखें। वो फिर दोबारा से लिखना है, तो आपने वो जो अगर गलत लिखा है उसे मिटाना शुरू नहीं कर देना, उसे छोड़ दें, उसके आगे लिख लें। क्योंकि आपने जितने भी आंसर्स होते हैं इनको ट्रांसफ़र करना होता है शीट पे, जो आपको आंसर शीट दी जाती है। तो जो आपके पास फ़िलहाल पेपर है, पेपर पे कर रहे हैं, तो वहाँ आपने टाइम ज़ाया नहीं करना कि मैं इसको पहले रिमूव कर लूँ, यहाँ से इरेज़ करूँ और फिर दोबारा लिखूँ, उसमें टाइम ज़ाया होगा। आप नंबर लिख लें, जो गलत है उसको छोड़ दें, उसके आगे सही लिख लें, और बाद में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ आप ठीक ट्रांसफ़र कीजिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे। अभी आप इसकी रिकॉर्डिंग सुने और इसके अकॉर्डिंग जवाबात लिखें, और इसके बाद इंशाल्लाह सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं। Cambridge Ielts 5 by University of Cambridge ESOL Examinations. Published by Cambridge University Press. This recording is copyright. CD 1. Test 1. You will hear a number of different recordings and you'll have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you'll have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation
between a travel consultant and a customer. First, you have some time to look at questions 1 to 4. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good afternoon, Dreamtime Travel. How can I help you? Oh, hello. I'm interested in the holidays you offer along the coast near here. Yes, we operate several tours up the coast. Where in particular did you want to go? Well, I like the sound of the holiday that mentioned whales. Was it, whale watching? Oh, that's our whale watch experience. It's very popular and it's based in a lovely little town with nice beaches. The holiday is called Whale Watch Experience, so Whale Watch Experience has been written on the form. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Good afternoon, Dreamtime Travel. How can I help you? Oh, hello. I'm interested in the holidays you offer along the coast near here. Yes, we operate several tours up the coast. Where in particular did you want to go? Well, I like the sound of the holiday that mentioned whales. Was it, whale watching? Oh, that's our whale watch experience. It's very popular and it's based in a lovely little town with nice beaches. Oh, right. And how long does it last? It's 2 days. That includes 4 hours travel time each way from here. Good. I don't want to be away any longer than that. So, is that by coach? Actually, it's by minibus. We like to keep those tours small and personal, so we don't take a whole coachload of people. In fact, we only take up to 15 people on this tour, although we do run it with just 12 or 13. Oh, right. So, do you run these tours often? Well, it depends on the time of year. Of course, in peak times, like the summer holidays, we do them every weekend, but at the moment, it's usually once a month at most. And when is the next one going? Let me see. There's one in 3 weeks' time, which is April the 18th, and then we don't have another one until June the 2nd. All right. And is April a good time to go? Pretty good, though the really good time is later in the year. I have to say, though, that the whale sighting is only one of the many things offered. Really? Yes, the hotel itself where you stay has great facilities. It's called the Palisades. The Paris what? No, it's actually the Palisades. Palisades. It's right on the main beach there. Oh, I see. All of the rooms have nice views and the food is really good there too. Oh, right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. And what about the other things, that are included in the price? Oh, there are lots of things. If you don't want to do the whale watch cruise, your guide will take anyone who is interested either on a bushwalk through the national park near the hotel, and there's no extra charge for that, or on a fishing trip. That's an extra $12, I think. And there's also a reptile park in town. That costs more or less the same. No, I think I'd prefer whales to snakes. Yeah. And if you just want to relax, you're free to sit by the hotel pool or go down the beach.
Oh, and they also have tennis courts at the hotel, but you have to pay for those by the hour. But there are table tennis tables downstairs, and they're part of the accommodation package. Just speak to your guide. Well, that sounds good. So how much is the basic tour price? At this time of year, it's usually around $300, but let me check. Oh, it's actually $280. And the next tour, are there any places on that one? How many people is it for? There are 2 of us. Yes, that should be fine. Can I just mention that we require all bookings to be made at least 14 days before you travel to avoid cancellations of tours? And if you cancel within 7 days of departure, you will have to pay 50% of your total booking. Okay. And you also need to pay a 20% deposit at the time of booking. Can I pay that by credit card? Yes, you can. All right, what I'll do is I'll talk to my partner and get back to you. Fine. So I'll make a provisional booking, shall I? 2 for the whale watch experience. Let me issue you with a customer reference number for when you call back. Do you have a pen? Yes. OK. It's 39745T. That's T for Tango. When you call back, ask to speak to the tour manager. That's me, Tracy. Fine, I will. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. चलिए जी, मुझे उम्मीद है कि सेक्शन 1 अच्छा गुजरा होगा। अब सेक्शन 2 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 to 19 और कंप्लीट द टेबल बिलो। टेबल आ गया जी। टेबल बड़ा आसान होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह की दी होती है कि जिससे बोलने वाला हट नहीं सकता, उससे पढ़े बगैर निकल नहीं सकता, तो वो हमें हिंट मिल जाती है वहाँ से कोई ना कोई आंसर के लिए। तो ये बड़े आसान होते हैं। लिखा हुआ जी, नो मोर देन 3 वर्ड्स फॉर ईच आंसर। 3 वर्ड से ज़्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इतने वर्ड का आंसर नहीं होना चाहिए। ये बताना और ये पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली यहाँ से गलतियाँ करते हैं। ये आपने गलती नहीं करनी। नीचे सबसे पहला जो डब्बा बना हुआ है जी, मैं इसको ये कहता हूँ जी टेबल है पूरा। तो इसमें आ गया जी ब्रांड ऑफ कोट। ये कोट है जी, जिसको हम झूला कह लेंगे, वो है। उसका ब्रांड है जी बेबी सेफ। ये एक ब्रांड है। आगे उसके गुड पॉइंट्स, इजी टू डैश। अब इजी टू डैश क्या है जी? उसका क्या हो सकता है कि उसे मूव करना इजी है, उसे कैरी करना इजी है, उसे किसी जगह पर रखना इजी है। कोई इस तरह का पॉइंट होगा जो आपने यहाँ लिखना है। आगे इसकी प्रॉब्लम है जी, इसकी पहले डिड नॉट हैव एनी डैश। इसकी कोई है नहीं। क्या नहीं है? इसका मतलब जंगला नहीं है, ठीक है, जो फेंस है वो नहीं है, या इसके अलावा इसकी ब्रेक्स नहीं है। कोई ना कोई एक चीज़ इसकी कोई मिसिंग है, तो ठीक है, वो आपने लिखनी है। इसकी अगली प्रॉब्लम है बेबीज़ को ट्रैप द डैश। बेबीज़ जो हैं, बच्चे हैं, वो अपनी कोई चीज़ ट्रैप कर सकते हैं। वो अपनी गर्दन ट्रैप कर सकते हैं, अपने पाँव कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स कर सकते हैं। कोई चीज़ इस तरह की होगी जो वो बोलेंगे इन दी साइड बार। जो साइड की बार्स हैं ना बनी हुई, जिनको मैंने जंगला बोला, फेंस बोला, तो उसमें जो वो बनी होती हैं स्टील की बार्स, अब उर्दू में मुझे याद नहीं आ रहा उनको हम क्या कहते हैं। तो ठीक है जी, वो सरिये जो बने होते हैं उनको जो उनमें फंसा सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम तो उनके रिलेटेड है, वो क्या चीज़ फंसा सकते हैं। आगे वर्डिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14। वर्डिक्ट में आएगा कोई एक लफ्ज़ बोलेंगे जी ये ठीक है, हमने ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो इस तरह की कोई बात करेंगे या कोई भी इस तरह का वर्ड बोलेंगे, तो वो आपने वर्ड लिखना है। इसके आगे ब्रांड ऑफ कोट है जी चॉइस कोट्स। चॉइस इसका नाम है, चॉइस कोट्स, और इसका गुड पॉइंट है इजी टू डैश। अच्छा, इसका इजी टू डैश, अब यहाँ कोई चीज़ मिस है, ठीक है, वो बड़ी इजी है, वो करना, वो आपने लिखना है आपने। और आगे इसकी प्रॉब्लम है साइड डिड नॉट ड्रॉप डाउन। इसकी जो साइड्स हैं वो ड्रॉप डाउन नहीं होती। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम इसकी स्पेस बिटवीन द बार्स व डैश। जो बार्स की स्पेस है, जो मैंने सरिया आपको बताया कि स्पेस जगह है, वो क्या है वो आपने बतानी है। तंग हैं, खुली हैं, या उनमें क्या मसला है वो आपने बतानी है। एक प्रॉब्लम उन्होंने बता दी आपको, साइड डिड नॉट हैव ड्रॉप डाउन, कि साइड की ड्रॉप डाउन नहीं है। और दूसरा इशू जो है वो रिलेटेड टू है बिटवीन बार्स। जो बार्स का है वहाँ से कोई इशू है वो आपने बताना है। और एंड पे 17 जो है उसमें आपने
वर्डिक्ट देना है, जो भी वर्डिक्ट आप सुनेंगे वो लिखेंगे। इसके आगे जी लास्ट हमारे पास जो है ब्रांड है वो मदर्स चॉइस है, ठीक है। और उसके जो गुड पॉइंट्स हैं, बेस ऑफ कॉट कुड बी मूव्ड, इसकी जो बेस है कॉट की वो मूव की जा सकती है। और प्रॉब्लम्स क्या, डिड नॉट हैव एनी डैश, इसकी कोई चीज़ नहीं है, कोई यहाँ मिस है वो आपने लिखनी क्या नहीं है। और दूसरा क्या है, पिक्चर्स कुड बी रिमूव्ड इजीली, जो पिक्चर्स लगी हुई हैं दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वो रिमूव आसानी से की जा सकती है कि बच्चे उसको फाड़ सकते हैं, उतार सकते हैं, तो वो ये भी प्रॉब्लम है। और इसका वर्डिक्ट आपने एंड पे लिखना है जी 19 का। और इसके आखिरी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्लीट द नोट्स बिलो। नोट्स कंप्लीट करने हैं, राइट वन वर्ड ओनली फॉर द आंसर, एक ही वर्ड लिखना है। अब ये देखें, एक दफ़ा वो आपको लेके आए 11 से 19 तक जहां आपने 3 वर्ड्स लिखने थे, एकदम से आखिरी क्वेश्चन आ गया जिसमें आपने एक वर्ड लिखना है। अब आप इसी रिदम में अगर आ रहे हैं तो आप 3 वर्ड लिखते आ रहे हैं, एंड पे आप आए एक वर्ड लिखना पड़ गया, आप वो सोचेंगे ही नहीं कि अब मैंने एक वर्ड यहाँ लिखना है, आप वहाँ पे 3 लिख देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ये इस तरह के कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट को ट्रैप करने के लिए ताकि वो अच्छे बैंड्स ना ले सके। तो ये है राइट वन वर्ड ओनली फॉर द आंसर, मैटर शुड नॉट बी रस्टेड और बेंट। एक तो ये है कि ये रस्टेड और बेंट नहीं होना चाहिए। एजेस ऑफ कोट शुड नॉट बी डैश, जो उसकी एजेस हैं, उसके किनारे हैं कोट के, वो कुछ नहीं होने चाहिए। वो क्या नहीं होने चाहिए, वो आपको इन्फॉर्मेशन लिसनिंग में मिलेगी, वो आपने बतानी है। तो चलिए सेक्शन नंबर 2 सुनते हैं, उसका आप आंसर्स लिखें और फिर सेक्शन नंबर 3 पे आते हैं। Section 2. You will hear a radio program giving parents advice about buying cots for their babies to sleep in. First, you have some time to look at questions 11 to 17. Now listen carefully and answer questions 11 to 17. Hello and welcome to today's Buyer Beware program, where we give you some tips on how to spend your money wisely. Now, in today's show, we're looking at beds for children and babies. Let's start by looking at baby cots. That's for children of up to 3 years old. We tested 3 different cots, all in the budget price range, and as usual, we will feature the good points, the problems, and our verdict. The first cot we looked at was by BabySafe, and it had several good points to recommend it. Our testers liked the fact that it had 4 wheels, so it was easy to move around. The only slight problems with this cot were that it had no brakes, but they didn't think that mattered too much. At first they were a bit concerned about the side bar because they felt babies could trap their fingers in it. But our testers felt that this was unlikely to happen, so they've given this one a verdict of satisfactory. The next cot was by Choice Cots, and this time our testers were pleased to find a cot which is simple to put together, unlike others we looked at. On the minus side, our testers did not like the fact that the side of the cot did not drop down, making it difficult to pick up newborn babies. However, the real problem with this cot was the space between the bars. Our testers found they were too wide and a baby could easily trap his head. We felt this was a real safety hazard, and so we've labelled this one dangerous, I'm afraid. Before you hear the rest of the programme, you have some time to look at questions 18 to 20. Now listen and answer questions 18 to 20. And finally, better news for the Mother's Choice cot. This cot was slightly different in that although the sidebar did not drop down, the base could be raised or lowered into 2 different positions, making it safe as well as convenient.
The negatives for this one were quite minor. The only niggle everyone had was the fact that it has no wheels, and the only other problem anyone could find was that there were pictures, which were simply stuck on and so could easily become detached. The makers have now promised to discontinue this practice, as this cot will then be safe in every way. We have made the Mother's Choice cot our best buy. Congratulations, Mother's Choice. So, what features should you look for in a baby's cot? Well, obviously, safety is a very important factor, as well as comfort and convenience. We recommend that if you are buying a cot, do make sure that any metal present is not rusted or bent in any way. You should ensure your cot has only rounded or smooth edging without any sharp edges. This is especially important for wooden cots. And now, on to beds for toddlers. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. हाँ जी, कमिंग बैक टू क्वेश्चन सेक्शन नंबर 3, मुझे उम्मीद है कि सेक्शन 1 और 2 अच्छा गुजर गया होगा. अब सेक्शन नंबर 3 है जी, इसमें है जी चूज़ द करेक्ट लेटर ए, बी और सी. इसमें अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया आपके पास. क्वेश्चन नंबर 21 है, एंड्रू हैज़ वर्कड एट द हॉस्पिटल फॉर. एंड्रू ने हॉस्पिटल में काम किया कितने साल? फर्स्ट है 2 years, सेकंड 3 years और सी है 5 years. आपने सिर्फ एक दफ़ा ये जो हैं क्वेश्चन के जो आंसर नीचे दिए होंगे एक दफ़ा पढ़ने हैं, बार बार नहीं पढ़ेंगे. अगर बार बार आप पढ़ते जाएंगे और साथ आप लिसनिंग करते जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, आपका जवाब ठीक नहीं आएगा. मोस्ट प्रॉब्लली यही चांस होता है कि आपका जवाब ठीक नहीं आएगा. एक दफ़ा पढ़ लें, लिसनिंग पूरी तवज्जो दें कि वो क्या कह रहा है. इसमें क्वेश्चन आपके जो हैं वो तरतीब से आते हैं 21 से 22 फिर 23, लेकिन जो नीचे आपको जवाबात दिए गए हुए हैं मल्टीपल चॉइस ए बी सी डी, ये तरतीब में नहीं आते. हो सकता है वो पहले सी बोले फिर बी बोले फिर ए बोले, ठीक है, और ए बी सी बी इस तरह से भी बोल सकता है. तीनों की बात करेगा, इन्फॉर्मेशन एक ठीक होगी. वो कह सकता है कि 5 साल मैंने यहाँ काम किया, 2 साल मैंने यहाँ किया, 3 साल मैंने यहाँ किया, लेकिन आपने ये देखना है कि वो पूछ आपसे क्या रहे हैं. वो यहाँ पूछ रहे हैं एंड्रू हैज़ वर्कड एट द हॉस्पिटल फॉर. हॉस्पिटल में उसने कितना अर्सा काम किया, ये आपने बताना है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 है जो ड्यूरिंग द कोर्स एंड्रूज एम्प्लॉयर्स विल पे. कोर्स के दौरान एंड्रू के जो एम्प्लॉयर हैं, जो उनके मालिक हैं एंड्रू के, वो उसको पे करेंगे. हिज फीस फर्स्ट आंसर है, दूसरा है जी हिज लिविंग कॉस्ट और तीसरा है हिज सैलरी. इन तीनों में से कोई एक चीज़ उन्होंने पे करनी है और आपने ये याद रखना है कि उन्होंने पूछा ड्यूरिंग द कोर्स वो क्या पे करेंगे, तो उसका आंसर देना. 23 है जी द पार्ट टाइम कोर्स लास्ट फॉर. जो पार्ट टाइम कोर्स है वो कितना अर्सा रहेगा? 1 whole year, 18 months और सी 2 years. इनमें से आपने आंसर देना है. आगे क्वेश्चन नंबर 24 और 25 है चूज़ 2 letters ए टू ई. वो जिस तरह हमने सेक्शन 1 में पढ़ा था, इसी तरह यहाँ भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं. व्हाट टाइप ऑफ कोर्स वर्क आर रिक्वायर्ड ईच मंथ ऑन द पार्ट टाइम कोर्स. इन 5 में से 2 आंसर आपने देने हैं कि कौन से कोर्स वर्क आर रिक्वायर्ड हैं ईच मंथ कौन से कोर्स रिक्वायर्ड हैं. 2 इनमें से आंसर होंगे, वो आपने देने हैं. आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 to 30 है जी, कंप्लीट द समरी बिलो. यहाँ भी समरी आपने कंप्लीट करनी है. राइट नो मोर देन 3 words एंड नंबर फॉर ईच आंसर. मॉड्यूलर कोर्सेज इसका टाइटल है. लिखा स्टूडेंट स्टडी डैश ड्यूरिंग ईच मॉड्यूल. अब स्टूडेंट स्टडी करते हैं डैश ईच मॉड्यूल. डैश में वो ईच मॉड्यूल में क्या स्टडी करते हैं? फुल टाइम करते हैं, हाफ टाइम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, स्टडी करते हैं, या कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि ये वाला सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, कोई चीज़ एक स्टडी करते हैं ड्यूरिंग ईच मॉड्यूल, वो आपने लिखना है. अगला सवाल है अ मॉड्यूल टेक्स डैश एंड वर्क इज़ वेरी डैश. अब ये मॉड्यूल है वो क्या लेता है? वो टाइम हो सकता है कि वो इतना टाइम लेता है, साल लेता है, 6 महीने लेता है, इतने हफ्ते लेता है, ठीक है. इसके अलावा कुछ और हो सकता है जी, ये क्या लेता है? एंड द वर्क इज़ वेरी डैश. ये वर्क इज़ वेरी डैश हार्ड भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, ईजी भी हो सकता है. इनमें से कोई आंसर हो सकता है. आगे क्वेश्चन नंबर 28 आ गया जी. और टू गेट अ डिप्लोमा ईच स्टूडेंट हैज़ टू स्टडी डैश. डिप्लोमा हासिल करने के लिए हर स्टूडेंट को डैश स्टडी करना होता है. क्या स्टडी करना होता है? कोई सब्जेक्ट वगैरह हो सकता है, वो आपने स्टडी करना होता है.
या कुछ अरसे के लिए स्टडी करना होता है, वो टाइम बताया जा सकता है, वो आपने लिखा है। एंड देन वर्क ऑन डैश इन डेप्थ, किसी एक चीज़ में डेप्थ में वर्किंग करनी होती है। डेप्थ यानी कि डीप, बहुत ज़्यादा उसमें गौर व खोज करना होता है, उसका मताला ज़्यादा करना होता है, उसमें आपने स्टडी करना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सेक्शन नंबर, तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 3। अब इसकी आप लिसनिंग सुनिए, इसके आंसर दीजिए और फिर सेक्शन नंबर 4 पे आएंगे और उसके बाद एंड पे 40 जो आंसर्स हैं वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। Section 3. You will hear a conversation between a student, Andrew, and a student advisor, Monica, about a diploma course. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Excuse me, I was told to come here for advice about management diploma courses. You've certainly come to the right place. Hi, my name is Monica. Nice to meet you. My name is Andrew Harris. So, Andrew, have you seen our diploma course prospectus yet? Yes, I've already looked at it. In fact, I thought the information on course content was really useful. But I'm afraid I'm a bit confused by all the different ways you can do the course. Full-time intensive, part-time, and so on. Well, let's see if I can help. I think each course type has its advantages and disadvantages, so it really depends on you, your own study habits, and your financial circumstances, of course. Are you working at the moment? Yes, I've been working in the administration section of the local hospital for the last 3 years. And before that, I worked in the office of a computer engineering company for 2 years. So I've got about 5 years of relevant work experience. And what I'm hoping to focus on is personnel management. I see. And are you planning to leave your current job to study, or are you thinking about just taking a year off? I want to know what my options are, really. I don't want to quit my job or anything, and my employers are keen for me to get some more qualifications, but obviously it would be better if I could do a course without taking too much time away from work. Right. So you don't really want to do the full-time course, then? No, not really. It's also a question of finances. You see, my office have agreed to pay the cost of the course itself, but I would have to take unpaid leave if I want to study full-time, and, well, I don't think I could afford to support myself with no salary for a whole year. OK. Well, you have two other possibilities. You could either do the part-time course, that would be over 2 years, and you wouldn't have to take any time off work, or you could do what we call a modular course. You could do that in 18 months if you wanted, or longer. It's quite flexible, and it would be up to you. So what does the part-time course involve? For that, you would join an evening class and have a lecture twice a week. Then you'd have to attend a seminar or discussion workshop 1 weekend a month. What kind of coursework would I have to do? Well, it's a mixture. You'd be expected to write an essay each month, which counts towards your final assessment. You have a case study to do by the end of the course, which might involve doing a survey or something like that. And also you need to hand in a short report every 4 weeks. So that's quite a lot of work then, on top of working every day. It sounds like a lot of studying, and really tiring. Yeah, you certainly wouldn't have much free time. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30.
What about the modular course? What would I have to do for that? Well, that's where you get the opportunity to study full-time for short periods. That way you can cover a lot of coursework and attend lectures and seminars during the day. And each module lasts for one term, say about 12 weeks at a time. There are obvious advantages in this. The main one being that you can study in a much more intensive way, which suits some people much better. And how many of these modules would I have to do to get the diploma? The current programme is 2 modules, and then you have to choose a topic to work in more depth. But you can base that on your job, and so you don't need to be away from the office. And how long it takes is up to you. Mm-hmm. The important thing is that you don't have to study and work. You can focus on one thing at a time. Yes, I can see that. It certainly sounds attractive. It would be more expensive, though. I mean, I'd have to support myself without pay for each module. That's true, so that might be a problem for you. Look, why don't you talk this over with your employers and then come back? That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. वेलकम बैक। उम्मीद है कि सेक्शन 3 आपका अच्छा गुजरा होगा। अब आ गया सेक्शन 4 पे। क्वेश्चन है 31 to 35। अब इस सेक्शन में ये होता है कि 31 से शुरू होंगे और 40 तक ब्रेक नहीं लगाएंगे। 10 क्वेश्चन पूरे आपने करने होते हैं। आपने ये नहीं करना कि ऊपर लिखा हो 31 to 35 तो आपने यहाँ तक पढ़ लेने, आपने पूरे पढ़ने हैं। आपने 31 से 40 तक आपने ये पढ़ लेने हैं, क्योंकि आपको ब्रेक नहीं मिलेगी। और आपने ये पढ़ने के बाद पूरा फोकस करना है लिसनिंग पे। इसमें एक तो डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी, इसमें स्पीड ज़्यादा होगी बोलने वाले की। आपने इस चीज़ पे गौर करना है, उसके मुताबिक आंसर देने हैं जल्दी से और बड़े गौर से सुनना है वो बात क्या कर रहा है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। राइट नो मोर देन 3 words फॉर ईच आंसर। 3 वर्ड से ज़्यादा उनका आंसर नहीं होना चाहिए। 31 है जी। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मैन आर सपोज टू अंडरस्टैंड डैश इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। दो उन्होंने बता दिया आपको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जो सब्जेक्ट्स हैं, वो कहते हैं जी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कि मैन आर सपोज टू अंडरस्टैंड। ये जो आदमी हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और एक उन्होंने नहीं बताया, इनमें से एक सब्जेक्ट और होगा, वो आपने बताना है। 32 है हाउएवर वुमेन आर मोर प्रिपेयर्ड टू डैश अबाउट दैम। अब जो औरतें हैं उनके बारे में भी एक बात की है, हाउएवर वुमेन आर मोर प्रिपेयर्ड टू डैश अबाउट दैम, कि औरतें जो हैं वो भी किसी चीज़ के मतलब ज़्यादा सोचती हैं, कंसर्न होता है उनका, तो या तैयार होती हैं। वो क्या चीज़ है वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 है वुमेन टेंड टू सेव फॉर डैश एंड अ हाउस। अब जो औरतें हैं वो सेव किसके लिए करती हैं? एक तो उन्होंने बता दिया हाउस के लिए, दूसरे किसके लिए करते हैं? वो अपने बिज़नेस के लिए करती हैं, अपनी जवानी के लिए करती हैं, बच्चों के लिए करती हैं, हस्बैंड के लिए करती हैं, किस लिए सेव करती हैं, वो आपने सेविंग उनकी बतानी है। 34 है मैन टेंड टू सेव फॉर डैश एंड फॉर रिटायरमेंट। अब मर्दों का भी यही है कि मर्द जो है एक तो रिटायरमेंट का उन्होंने बता दिया, रिटायरमेंट के लिए सेव करते हैं, और एक चीज़ उन्होंने मिस किया, वो किसके लिए करते हैं, ये भी आपने बताना है। 35 है वुमेन हु आर लेफ्ट अलोन मे हैव टू पे फॉर डैश व्हेन दे आर ओल्ड। अब जो औरतें वो कहता है कि अकेली रह जाती हैं, उनको पे करना पड़ता है जब वो बूढ़ी हो जाती है। किस चीज़ के लिए पे करना पड़ता है ये आपने बताना है। उनको अपनी खुराक के लिए पे करना पड़ता है, अपनी देखभाल के लिए, केयर के लिए करना पड़ता है, मुलाजमों को पे करना पड़ता है, या किस चीज़ के लिए उनको पे करना पड़ता है, वो एक आपको लिसनिंग में चीज़ बताएंगे, वो आपने लिखनी है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 36 to 40 कंप्लीट द समरी बिलो। राइट नो मोर देन 3 words एंड नंबर फॉर ईच आंसर। ठीक है जी, 3 words से ज़्यादा का आंसर नहीं होने। सेविंग फॉर फ्यूचर इसका टाइटल है, और नीचे है जी रिसर्च इंडिकेट्स दैट मेनी वुमेन ओनली थिंक अबाउट देयर फाइनेंशियल फ्यूचर व्हेन अ डैश ऑकर्स। औरतें जो हैं ज़्यादातर वो अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में कब सोचती हैं? जब कुछ एक चीज़ होती है, वो क्या होती है, वो हैपन होती है कोई चीज़, वो आपने लिखनी है। दिस इज़ द वर्स्ट टाइम टू मेक डिसीजन। इट इज़ बेस्ट फॉर वुमेन टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पेंशंस व्हेन दे आर इन देयर डैश। अब वो कह रहे हैं इट इज़ बेस्ट, औरतों के लिए ये बेस्ट है कि वो उस वक्त अपनी पेंशन के बारे में सोचना शुरू कर दे जब वो होती हैं। कब होती हैं? जवानी में होती हैं, बुढ़ापे में होती हैं, जब नौकरी उन्हें मिल जाती है, या नौकरी के दरमियान में होती हैं। इस तरह का कोई आंसर होगा वो आपने लिखना है।
अ गुड वे फॉर वुमेन टू डेवलप द डैश, एक अच्छा तरीका औरतों के लिए कि वो डेवलप करती हैं देयर डैश, अब वो इन डीलिंग विद फाइनेंशियल अफेयर्स वुड बी टू अटेंड क्लास इन, अब वो कोई चीज़ डेवलप करती हैं, वो क्या डेवलप करती हैं वो बताएंगे। और आगे है जी इन डीलिंग विद फाइनेंशियल वुड बी टू अटेंड क्लास इन डैश, अब वो किसी चीज़ में वो क्लास जो है अटेंड करती है किस में, एंड व्हेन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इन शेयर्स इट इज़ सजेस्टेड दैट वुमेन शुड पुट अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ देयर सेविंग्स इन डैश, और जब वो स्टॉक्स और शेयर में हिस्सा लेती हैं तो ये उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो अपना ज़्यादातर हिस्सा किस में रखें, ये आगे वो एक चीज़ है वो मिस है, वो आपने बताना है किस में सेविंग करें। इन सच वे वुमेन कैन हैव अ कंफर्टेबल इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट, इस तरीके से वो एक अच्छी खासी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार सकती हैं, कंफर्टेबल आरामदेह। ये हमारा सेक्शन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, और अब इसको सुनिए, इसके आंसर दीजिए, और इंशाल्लाह एंड पे आपको इन 40 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, और आप अपने आप को रोज़ बरोज़ तज्ज़िया अपना कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आपने एक रिकॉर्डिंग सुनी, एक लिसनिंग टेस्ट किया, दूसरे में कितनी बेहतरी आई, तीसरे में कितनी आई, चौथे में, इस तरह सुनते रहिए। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, दुआ में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Section 4. You will hear part of a lecture given by an economist about North American women's attitude to money and saving. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Okay, so we've been looking at the attitudes of various social and cultural groups towards the management of their personal finances, how important they feel it is to save money, and what they save their money for. One aspect that we haven't yet considered is gender. So if we consider gender issues, we're basically asking whether men and women have different attitudes towards saving money, and whether they save money for different things. Back in 1928, the British writer George Bernard Shaw wrote in his Intelligent Women's Guide to Socialism and Capitalism that a man is supposed to understand politics, economics, and finance, and is therefore unwilling to accept essential instruction. He also said, a woman, having fewer pretensions, is far more willing to learn. Now, though these days people might question a lot of the assumptions contained in those statements, recent research does suggest that there are some quite fundamental differences between men and women in their attitudes to economic matters. Let's look at what men and women actually save for. Research studies of women in North America have found that women are far more likely to save for their children's education, and they are also more likely to save up in order to buy a house one day. The same studies have found that men, on the other hand, tend to save for a car, which, by the way, takes a surprisingly large amount of the household budget in North America. But the other main priority for men when saving money is their retirement. When they're earning, they're far more likely to put money aside for their old age than women are. Now, this is rather disturbing, because, in fact, the need for women to save for their old age is far greater than for men. Let's consider this for a moment. To start with, it is a fact that throughout the world, women are likely to live many years longer than men, so they need money to support them during this time. Since women are likely to be the ones left without a partner in old age, they may therefore have to pay for nursing care, because they don't have a spouse to look after them. Furthermore, the high divorce rates in North America are creating a poverty cycle for women. It is the divorced women who will most often have to look after the children, and thus they need more money to look after not just themselves,
but others. So what can be done about this situation? The population in North America is likely to contain an increasing number of elderly women. The research indicates that at present, for women, it takes a crisis to make them think about their future financial situation. But of course, this is the very worst time for anyone to make important decisions. Women today need to look ahead, think ahead, not wait until they're under pressure. Even women in their early 20s need to think about pensions, for example, and with increasing numbers of women in professional positions, there are signs that this is beginning to happen. Then research also suggests that women avoid dealing effectively with their economic situation because of a lack of confidence. The best way for them to overcome this is by getting themselves properly informed so they are less dependent on other people's advice. A number of initiatives have been set up to help them do this. This college, for example, is one of the educational institutions which offers night classes in money management, and increasing numbers of women are enrolling on such courses. Here, they can be given advice on different ways of saving. Many women are unwilling to invest in stocks and shares, for instance, but these can be extremely profitable. It is usually advised that at least 70% of a person's savings should be in low-risk investments. But for the rest, financial advisors often advise taking some well-informed risks. Initiatives such as this can give women the economic skills and knowledge they need for a comfortable, independent retirement. The increasing proportion of elderly women in the population is likely to have other economic consequences. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. That is the end of the listening test. In the Ielts test, you would now have 10 minutes to transfer your answers to the listening answer sheet.